Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of NCCI MSME Council, extend my heartiest warm welcome to you all in a workshop on technical preparedness for departmental audit under GST for MSMEs. Friends, India has completed more than 3 years of the GST regime. GST has been a milestone of the Indian tax regime now. Although GST has stabilized to a greater extent, the business entities are still grappling with some compliance-related issues. Particularly in recent times, some businesses have been issued notices by tax authorities for conducting GST audits. Section 2 within bracket 13 of the CGST Act 2017 defines audit as the examination of records, returns, and other documents maintained or furnished by the registered person under this Act or the rules made there under any other law for the time being enforced to verify the correctness of turnover declared, taxes paid, refund claimed, and input tax credit availed. There are different categories of GST audit under this Act. Under Section 35, audit by tax authorities under Section 65, and special audit under Section 66. As per GST audit under Section 35, auditors play a very important role both for the auditee as well as the tax department. GST audit under Section 35(5) is a stage where auditors verifying the details of turnover declared, taxes paid, refund claim, and input tax credit availed for the registered tax filer. This is corrective mechanism at the time of filing taxes before assessment is initiated. Auditors' lawful recommendations and observations help auditee from future litigations, fine, penalties, so on and so forth. In course of an assessment, Section 65 provides that the commissioner may issue notice for audit. As per rule, 15 days prior notice is required to be given in Form GST ADT 01 to the registered person before commencing the GST audit. In some special cases, any officer not below the rank of assistant commissioner may initiate the special audit if they are of the opinion during any state of investigation that the value has not been correctly declared or the wrong credit has been availed. The third type of audit is called the special audit under Section 66. In special audit, the registered person can be directed to get his records, including book of account, examined and audited by a chartered accountant or a cost accountant during any stage of scrutiny, inquiry, investigation, or any other proceedings, depending upon the complexity of the case. The officer not below the rank of assistant commissioner may direct the registered person to get his account audited by a chartered accountant or a cost accountant as nominated by the commissioner. Sir, to know more about the different aspects of audit under GST, we are honored to have CA Abhishek Agarwal today with us to enlighten us on the issue. CA Abhishek Agarwal is the founder of Abhishek Shankar Agarwal and Associates and specializes in goods and services tax and indirect tax area. He has previously worked as a partner with Bass and Company LLP in the field of taxation litigation and support services. Sri Agarwal has the degree of Diploma in IS Audit from Institute of Chartered Accountants of India. He has completed his industrial training from none other than ITC Limited, Virginia House, Kolkata. Mr. Agarwal, it is an honor for us to have you address us on this critical issue. Apart from the GST audit, I'll request Sri Agarwal to cover the input tax credit eligibility and ineligibility issues with the purview of GSTR 3B versus 2A and 2B mismatch also for the benefit of our MSME units. With these few words, I now request C. Abhishek Agarwal for his address. Thank you. Thank you, Sandeep sir, for the warm introduction.
At the outset, I will thank MCCI to take the initiative for organizing seminars like this. Thank you, Chairman. Thank you, Co-Chairman, and thank you the entire team of MCCI to take out time and for the benefit of the members, taking all this small but very important initiative rather. So, jumping to my topic, I will just share my screen. Okay, I guess it is visible. Yes. Perfect. So we'll have few rules here. One is all the participants are free to ask whatsoever is their Yes, query please. through chat box, and stop me wherever you can. Ask me as much questions as you can. I will I I will ensure that I will share my thoughts on all your queries. Right? Could be possible that I'm moving with a flow and your query is supposed to be answered in a following slides. So I will skip for a while, but by end of the session we will have a discussion on your queries for sure. Right? So the department audit, before going into the slides, I will just share a brief that this particular assignment rather has to be taken care of from three different angles. One is the professionals. So as I know that among all the participants, there are a few professionals also attending this session. So there could be a perspective from a professional perspective, what to do, what not to do, how to prepare the clients, how to handle the department officers. That is different. Uh, then there is a perspective of the officers, uh, an officer who is conducting a department audit. So what powers they have, what can they access, what can they not access, how to point out a issue if they encounter during examination of books of accounts. So there's a department perspective, and third comes what we say the general, the businessman perspective, right? So today I will be focusing on basically the businessman perspective. So I will discuss the technical pointers, which we all should take a note of it. Which, if we are business owners, then we should go to our team and ask कि ये सब हुआ कि नहीं हुआ. And if we are the team members, if we are the field staff, then we should take a note of it and we should ensure that हमारे organization में ये सब चीजें ठीक है या नहीं है, right? So that will be the basic flow of the entire deliberation. Okay. Okay. So before jumping to this, I would rather ask everyone that I'm opening my chat box here, right? I'm opening my chat box here, and I would rather ask everyone that what do you understand? Is there any difference? Is there any difference among the assessment? आज हमारा असेसमेंट हो रहा है जीएसटी के अंदर और हमारे यहाँ पर ऑडिट हो रहा है. क्या कोई डिफरेंस है? ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हमारी जीएसटीएन की असेसमेंट हो रही है और एक डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हमारे ऑफिस में आए हैं और हमारा डिपार्टमेंटल ऑडिट हो रहा है. Is there any difference? See, I would request, there we are good number of participants for a start. So I would request everyone to just be very informal and start discussing on the same. Yes, no. Okay, there is a difference, right? Perfect. There is a difference. So that mindset is very important. It is no wrong thing or a no, not a taboo which we should continue that अरे यार हमारा डिपार्टमेंट ऑडिट हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. If you have a merely assessment, let's first give 2 minutes time to chapter 12 which talks about assessment. सर असेसमेंट में सेक्शन 59 से 64 कवर होते हैं. 59 क्या बोलता है? सेल्फ असेसमेंट. ये क्या होता है? सर आप 4 साल से कर रहे हैं. GSTR 3B इज अ सेल्फ असेसमेंट. एनुअल GSTR 9 एनुअल रिटर्न आप कर रहे हैं. तो दैट इज अ सेल्फ असेसमेंट विच आप अपने हाथ से बता रहे हैं कि मेरा इतना लाइबिलिटी है, मेरा इतना ITC है, मुझे इतना पेमेंट करना है मेरे अकॉर्डिंग. तो दैट इज अ असेसमेंट डन बाय योरसेल्फ.
provisional assessment. If you have doubt that what rate to be charged, what valuation to be done, you can always go to the officer and ask for a provisional assessment. Scrutiny of returns. आपने जो भी रिटर्न भरा खाली उसकी स्क्रूटनी कर सकता है डिपार्टमेंट. That is scrutiny of returns. If you are not filing your returns, then against you a best judgment can be done from whatever data a officer have under section 62, that is assessment of non-filers, right? Next, if Abhishek is a person who is not even registered in the GST Act, but he was supposed to be registered, so uski assessment ki power bhi hai officer ke paas under section 63, that is assessment of an unregistered person. Important, right? And next, if there can be a summary assessment whatsoever it is required by the officer. So this is the overall outline of assessment, which is altogether different from department audit, right? Next we have section 73 and 74. Friends, please understand in this just a minute. Set the screen. Yeah, perfect. So in this, what we feel is chapter 15 defines 73, 70, and 74. This is notices, rather show cause notices. Officer will give you a show cause notice and ask, मैं इतने पैसे आपसे क्यों चार्ज नहीं करूं, वो आप मुझे बताएं. So वो आपसे मांग रहा है कि आप रीजन दीजिए कि मैं ये आपके ऊपर डिमांड क्यों नहीं करूं. Friends, I'm audible? Yeah. Okay. So section 71 talks about access to business premises. This is very important for all of us to know कि 71 के तहत अपने को समझ में आ जाता है कि एक ऑफिसर हमारे ऑफिस में जब आएंगे तो उनका क्या राइट है, उनका क्या पावर है, तो वो जो भी करेंगे वो 71 के तहत करेंगे, राइट? नेक्स्ट, चैप्टर 14 टॉक्स अबाउट इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर. अपने हिंदी भाषा में बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स एक्सपीरियंस एंड मूवीज जो बोलते हैं अपने रेड पड़ गया, तो वो चैप्टर 14 है जो बोलता है इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट. So that is a different chapter altogether. So friends, till now I have just drawn a line that chapter 12 talks about assessment, chapter 15 talks about demand and recovery, that is show cause notice, adjudications. Chapter 14 talks about inspection, search, seizure, arrest, and chapter 13 talks about audit, जिसमें department audit आती है, that is audit to be conducted by department officers, and special audit. So first point, first takeaway, first understanding for all the business owners here is department audit is merely a procedure, merely a process which will happen to your GSTN, right? वो आपके GSTN में हो ऐसी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, और होती है तो कोई गलत चीज नहीं है. इट इज नॉट इक्वल टू कि मेरे यहाँ रेट पड़ गया, नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप हर साल में रिटर्न लगाते हैं, हर साल में असेसमेंट करते हैं, आपके यहाँ पर साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडस्ट्री यू आर इन, आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑडिट हो ही सकती है. आगे बढ़ने के पहले अगर अपने एक बार रिवाइज करें तो वैट रेजिम में भी असेसमेंट होती थी, सर्विस टैक्स रेजिम में भी, एक्साइज रेजिम में भी डिपार्टमेंट ऑडिट होती थी, वो हमारे प्रेमाइसेस में आते थे. तो कोई इनडायरेक्ट टैक्स का कोई नया चीज नहीं हो रहा है जो जीएसटी में हो रहा है. इट इज ओनली overspamming of informations in the social media कि हम डर जाते हैं यार डिपार्टमेंट ऑडिट होने वाला है, क्या होगा. So first thing is that we cannot worry on this, right? We cannot worry on this. Okay. Good evening, sir. Good evening. Welcome.
Okay. Next, we are discussing now the definition of audit. मैं इसको बहुत टेक्निकल नहीं करूंगा, मैं आई विल जस्ट मेक इट मोस्ट एंड मोस्ट इंटरैक्टिव, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. ऑडिट डिफाइंड है जीएसटी में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में. ये क्या बोलता है? दिस सेज audit means examination. Audit means examination of records, returns, and other. Just hold on, I will minimize this. Perfect. Examination of what? Returns, records, and other documents. 3 चीज का आप एग्जामिन कर सकते हो. परफेक्ट. डॉक्यूमेंट्स किसका? जो आप जीएसटी में बनाते हो या फिर आप और कोई भी लॉ में बनाते हो, वो भी ऑडिट के परव्यू में आएगा. सो मैं अगर जीएसटी की ऑडिट में हूं तो मैं आपका ईएसआई पीएफ का भी डॉक्यूमेंट देख सकता हूं, मैं आपके टीडीएस रिटर्न्स को भी चेक कर सकता हूं, बिकॉज दैट वे आर सपोज टू बी मेंटेन अंडर इनकम टैक्स लॉ, ईएसआई लॉ, पीएफ लॉ. मैं जो भी एग्जामिन कर रहा हूं, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस? द अल्टीमेट पर्पस इज व्हेन आई डू अ ऑडिट, I have to verify the correctness. I have to verify the correctness of 4 things. Again, turnover declared, taxes paid, refund claimed, ITC availed. Okay, turnover क्या दिखाया आपने? टैक्स कितना पेमेंट किया, रिफंड कितना क्लेम किया, आईटीसी कितना अवेल किया. ओके, और क्या एग्जामिन करेगा? सर ये इंपॉर्टेंट है, वो हमारी कंप्लायंस को भी एसेस करेगा. टू एसेस द कंप्लायंस. सर कंप्लायंस एसेस करेगा, इसका मतलब सर मैं पूरे एग्जांपल में, पूरे डिलिब्रेशन में, फॉर एन एग्जांपल आई एम द ऑफिसर, मैं आपके प्रीमाइसेस में घुसूंगा और मैं देखूंगा कि अरे बाहर में आपका जीएसटी नंबर डिस्प्ले नहीं था. ओके, मैं अंदर प्रीमाइसेस में घुसा तो मुझे जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं दिखा. ओके, तो दिस टू आर द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ. So I can always levy penalty on it, and this comes under the purview of audit. So audit के अंदर मैं बुक्स को एग्जामिन कर ही सकता हूँ, बट मैं कंप्लायंस भी चेक कर सकता हूँ. इसकी पावर मुझे सेक्शन 213 देती है. राइट, तो आई मेड माई पॉइंट, द स्कोप ऑफ ऑडिट इज वेरी ह्यूज. वो एग्जामिन करेगा सिर्फ 3 चीज, रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. अब अपने आगे बढ़ते हैं. जब अपने आगे जाएंगे तो समझ में आएगा दैट देयर आर फ्यू थिंग्स that there are few things that कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं क्या हम ऑफिस के ऊपर. सो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो कनेक्शन ही नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो यस यू कैन ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट कि दिस डॉक्यूमेंट हैव नथिंग टू डू विद योर बुक्स ऑफ, विद आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सो वी माइट नॉट बी कंफर्टेबल इन शेयरिंग दैट विद यू. यस, इन अ लिमिटेड स्कोप ऑफ कंसेप्ट, यस. अदरवाइज हर कोई चीज जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फॉर्मेशन बन रही है, दे कैन ऑलवेज कम एंड एग्जामिन दोस डॉक्यूमेंट्स. परफेक्ट. सेकेंड पॉइंट डन. थर्ड पॉइंट, in this we will discuss small pointers, right? First one, outward supplies जो आपके बुक्स में दिखाए हुए हैं वर्सेस जो आपके जीएसटीआर 1 में है वर्सेस जीएसटीआर 3B वर्सेस जितने की आपने ई वे बिल बनाई है वर्सेस जितना का आपने ई इनवॉइसिंग बनाया है. आई विल मेक माई पॉइंट मोर क्लियर. आज के दिन में अगर मैं ऑफिसर हूं तो मुझे डेटा कहां से मिल रही है? मुझे आपकी डेटा जीएसटीआर 1 से मिल रही है जो आप बता रहे हो, मुझे डेटा मिल रही है 3B से जो आप दे रहे हो. आप जब माल भेजते हो तो आप ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल बनाते हो, और अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है तो आप ई इनवॉइसिंग भी करते हो. तो आपकी लाइबिलिटी की डेटा, आपकी मूवमेंट ऑफ द गुड्स आउटवर्ड, दैट इज सेल्स की डेटा, मुझे ये 4 चीजें तो मिलती ही मिलती है. And now when I'm coming for an audit, I am having a right access of your books also. So मैं मंथ वाइज रेको बनाऊंगा. बुक्स में कितना है? 100 रुपया. 3B में कितना है? 100 रुपया. जीएसटी 1 में कितना है? 100 रुपया. ई वे बिल कितना है? 90 रुपया का. इनवॉइसिंग कितना बनाया? 90 रुपया का. So now I have different figures. So my next question to you will be, sir, what is the reasoning of this difference?
मैं ऐसा एक बार भी नहीं बोल रहा कि डिफरेंस हो नहीं सकता, डिफरेंस तो हो ही सकता है. My question will be straight away that what is the justification of the difference? That's it. एक और डिस्कस करते हैं इसको कि सर गलती से क्या हुआ, जीएसटी वन में एक ही इनवॉइस 2 बार अपलोड हो गया, या फिर जीएसटी वन में एक जीरो गलती से बेसी चला गया, 10,000 का 1 लाख रुपया हो गया सर, और आप देख लो 3B में हमने 10,000 ही पेमेंट किया है. एग्रीड, नो इशू, बट दैट जस्टिफिकेशन शुड बी हैंडी रेडी टू यू. सर ई वे बिल मैंने 90,000 का बनाया, 10,000 का नहीं बनाया, बिकॉज जो मूवमेंट हुआ था वो नॉन मोटराइज व्हीकल से हुआ था, नॉट रिक्वायर्ड टू डू ई वे बिल. इनवॉइसिंग क्यों नहीं बनाया सर, B2C सप्लाई हुआ था इसलिए इनवॉइसिंग दरकार नहीं था हमें करने का. सो माय पॉइंट इज मंथ ऑन मंथ just do not focus on filing your returns, but also maintain a notebook, diary, I don't know, reporting system, so that you have the reasoning for all these differences. Coming to inward supplies, सर इसमें मैं लिमिटेड बात करूंगा क्योंकि संजीव सर ने स्पेसिफिकली पूछा है इसमें 2A 2B का फाइट के बारे में डिस्कस करने के लिए. सो आई विल बी डूइंग दिस इन द लेटर हाफ. जस्ट इसमें एक लिमिटेड बात कर रहा हूं. सर इनवर्ड सप्लाई क्वेरी इज, मेरे सप्लायर ने मुझे माल बेचा, ओके, उसने अपने जीएसटी वन में दिखा दिया, परफेक्ट, मेरे 2A में आ गया, ओके. अगर वो जीएसटी वन के ड्यू डेट के अंदर भरता है, देन जीएसटी 2B में भी आ जाएगा सर. 2A में आ गया, 2B में आ गया, और मेरे बुक्स में मैंने क्रेडिट ले लिया, मेरे रिटर्न्स में मैंने क्रेडिट ले लिया. Now I can always cross tally or cross reconcile with my e-way bill also. If 50 invoices has been issued to me from all across other GSTN and the amounting of rupees 1 lakh ITC, how can I take a ITC of 2 lakh rupees? So I must have a reconciliation ready कि 1 लाख का देखो ई वे बिल है, 1 लाख का ई वे बिल क्यों नहीं है, 50,000 का सर्विस हो सकता है, 50,000 can be purchases on which e-way bill is not required. So this data should be available with us. 2, आपके GSTR 2A में, okay, I will just open the chat box once again and I will ask all the participants to answer. Sir, what if आपके जीएसटीआर 2A में 100 रुपया है, बट आपके जीएसटीआर 2B में मियरली 80 रुपीज है. वो 20 रुपया क्यों नहीं है, सामने वाला ने दिखाया, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं कि सामने वाला ने नहीं दिखाया, सामने वाला ने दिखाया बट उसने ड्यू डेट मिस कर दिया. जो जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है उसने मिस कर दिया, उसने अगले दिन सुबह भरा तो उसका नेक्स्ट जीएसटीआर 2B में चला गया. So my question to all the participant is, क्या वो क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि सिर्फ 2A में है, जीएसटीआर 2A में है बट 2B में नहीं है. तो my question to you is, क्या वो 20 रुपीज का क्रेडिट अवेल कर सकता है? I will ask every participant to answer this. Okay, yes, no, yes. Okay. So I'm getting few yes and many no's. Okay. सर अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं. नेक्स्ट मंथ 2B में आ जाएगा तब ले लेंगे, एकदम परफेक्ट है सर. सर मेरे साथ सर 9 अक्टूबर 2019 को जीएसटीआर 2A आया. वो क्या बोला कि सामने वाला जीएसटीआर 1 भरेगा, आपके 2A में आ जाएगा, आप क्रेडिट ले लो, जितना भी क्रेडिट दिखता है उससे काम करो, 20% बेसी ले लो. Whatsoever eligible ITC is available in your books of in your GSTR 2A, go and take 120% of the same. इसी चीज को उन्होंने 1 जनवरी 2020 को 10% कर दिया. नेक्स्ट 1 जनवरी 2021 को उन्होंने 5% कर दिया. So this is something which what happened to GSTR 2A. Now they have come with GSTR 2B. ये रूल 60 लाया, 2A लाया था रूल 36 सब रूल 4, एंड GSTR 2B लाया
रूल 60 सर, इसने क्या बोला कि जीएसटी 1 वाले ड्यू डेट वाले दिन रात को 12 बजे आपकी 2A को काट के अलग कर देंगे. नाउ इट विल बी नो लॉन्गर डायनेमिक, इट विल बी स्टैटिक डेटा, राइट. एंड 2B में आएगा, आप 3B में ले सकते हो. अगर आप 2B में जो आया उससे बेसी ले रहे हो 3B में, तो 3B विल बी रेड इन कलर. 3B will be red in color. And since it's an insertion from Rule 60, 1 जनवरी 2021 से अमेंडमेंट आ गया कि अगर आप कोई भी रूल कॉन्ट्रावेंट करते हो, so an officer can always come down. An officer can always come down to suspend your GST number altogether. To suspend your GST number altogether. So my point is, there are two provisions. Number one, 36(4) which says GSTR 2A में आएगा तो ले लो. Second, there is a provision called GSTR 2B, Rule 60, which says कि अगर आप उसके बेसिस लोगे तो 3B लाल कर देंगे, और लाल करेगा तो मन में डर आ रहा है कि भैया मेरा GST नंबर सस्पेंड नहीं करते. So this is the problem. What is the solution? Sir, we have to get into the notification through which GSTR 2B was inserted. In that particular notification, when we go to notes of the form GSTR 2B, the first couple of points specifically says कि अगर आपके GSTR 2B में नहीं है, अगर वो पर्टिकुलर इनवॉइस आपके GSTR 2B में नहीं है एंड आपके GSTR 2A में है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड टेक द क्रेडिट. ये 2B के इंस्ट्रक्शन में ही लिखा हुआ है. ये GSTR 2B के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आप जाके GSTR 2A में देख लीजिए, अगर अवेलेबल है, और 2B में अवेलेबल नहीं है, you can always go and take the credit. So my humble submission is, you please reconcile GSTR 2B and books for taking the credit. And after that, when you are going to pay, just for a second cross check, do compare with your GSTR 2A कि कोई भी इनवॉइसेस अगर वहां अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं. स्ट्रिक्ट रीडिंग ऑफ द लॉ, अगर अमाउंट बहुत छोटा है मत लीजिए सर, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे. पर अमाउंट बहुत बड़ा है, लेट्स से मैंने अखिल सर से 1 करोड़ का माल खरीदा और मैंने 1 करोड़ 5 लाख में संजीव सर को माल बेच दिया. मैंने अपनी GSTR 1 लाइबिलिटी ड्यू डेट में दिखा दी, आई एम लायबल टू पे. अखिल सर ने अपने स्टाफ को बोला कि तुम दिखा देना. यस सर. वो DSC नहीं था, लॉकडाउन का चक्कर में नेक्सिस पे लगाया सर, GSTR 1 लगाया वो भी. बट इन दिस सिनेरियो माय GSTR 1 ड्यूली फाइल्ड, आई एम लायबल टू पे, आई हैव टू पे. अखिल सर शोड इन GSTR 1 बट आफ्टर ड्यू डेट, तो मेरे 2A में नहीं है, मेरे 2B में है. अब सर 1 करोड़ का मैंने परचेज किया, 18 लाख मेरे GST अमाउंट है, मेरे 2B में नहीं है, मेरे 2A में है, और मेरे लाइबिलिटी 18 लाख रुपए की है. तो अगर मैं कंसिडर नहीं करूंगा तो आई विल एंड अप बाय पेइंग दैट 18 लाख रुपीस फ्रॉम माय बैंक अकाउंट, which is not feasible. So my humble submission, practically आप 2A भी चेक करो, आप 18 लाख क्रेडिट ले लो, and you can, if a officer point this out, humbly go and explain this reconciliation. Sir, it is available in 2A, I have full right. See, we cannot say that officer ऐसे करेगा. The officer is binded with the rules and regulations. He is not here to bother us. He is only here to perform his idle duty. So with all the instruction and the complexity of the law, we only have to guide him कि देखो भैया ये हमने इसके अकॉर्डिंग किया, जब जहां बोनाफाइड है वहां कोई दिक्कत नहीं है. राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज ITC only available when goods are received. We all have to take care of the fact that we only claim ITC when we have actually received the goods or services, right? For example, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं. आज है 12 जून, मैंने सर को बोला कि सर मैं दिल्ली जा रहा हूं 4 जुलाई को मैंने आज ही ट्रैवल एजेंट को फोन किया, ही सेंड मी द टिकट्स, मैंने पेमेंट कर दिया और मेरे अकाउंटेंट ने क्रेडिट ले लिया. सर द सर्विस विल बी रिसीव इन द 4th of July. Since I am receiving the service on 4th July, I cannot take the credit in the month of June. So this is a service component which is dicey on us.
गुड्स में कोई दिक्कत नहीं है, जीआरएन देख लीजिए, जिस दिन आपका जीआरएन बना है, जब आपको गुड्स रिसीव हुए हैं, आप उसी मंथ क्रेडिट ले सकते हैं, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड चेक दिस। ओके, पेमेंट विद इन 180 डेज, ये क्या है सर? लॉ क्या बोलता है? प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 16, वो ये बोलता है कि अगर अभिषेक ने आपको माल बेचा और आपने अभिषेक को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो आप अभिषेक की बिल की आईटीसी भी नहीं ले सकते। अगर आपने आईटीसी लिया है तो उसको रिवर्स कर दीजिए विथ इंटरेस्ट, और जब भी आप पेमेंट करोगे 180 डेज के बाद, देन प्लीज टेक द क्रेडिट अगेन, बट द इंटरेस्ट पोर्शन इज द कॉस्ट। दिस इज द प्रोविजन ऑफ द लॉ व्हिच एन ऑफिसर विल ऑलवेज पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं ये जितना भी पॉइंटर्स बना रहा हूँ ना, मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि अगर मैं ऑफिसर होता और मैं आपके प्रीमाइसेस में आता तो मैं क्या देखता, राइट? तो एज अ ऑफिसर आई एम पॉइंटिंग आउट कि दिस पॉइंट आई शुड चेक। Parallelly, I personally have a different school of thought here, only on this point, that okay, sir, I will come to your question. So that अगर हम आपसे ये बॉन्ड में उठा रहे हैं माल कि सर आपसे मैं माल खरीद रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा पेमेंट ही आएगा 275 डेज के बाद, सो आई विल पे यू इन 300 डेज। मैं ये एमओयू साइन करके आपसे माल ले रहा हूँ, सो क्या उस केस में भी क्या दिस प्रोवाइजो विल अफेक्ट मी? सो एज पर स्ट्रिक्ट रीडिंग ऑफ द लॉ, yes, I am liable to reverse the credit, but as per interpretation and comparing the provisions of service tax law versus GST law, the word used in the GST law is fails to pay. क्योंकि 300 दिन अभी तक आया ही नहीं है, I have never failed to pay you. My ITC is not supposedly to be reversed. This is my humble thought process. There might be different school of thought. So since I am pointing out as an officer that मैं क्या देखूंगा, I should also bring this thought to the table that we only should not read the law as it is. We should also interpret in our basic understanding, right? Next, sir, reverse charge mechanism. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में काफी सारे पॉइंट्स हैं, मैं खाली यहाँ डाल रहा हूँ सेल्फ इनवॉइसिंग। सर मैंने जीटीए से माल भेजा, जीटीए ने बिल्टी मुझे दे दिया, मैंने उस पर रिवर्स चार्ज पेमेंट करवा दिया और मैंने क्रेडिट भी ले लिया। सर इसमें दो एलिमेंट हुई, आपने रिवर्स चार्ज का पेमेंट करवाया, यू हैव पेड द टैक्सेस ऑन रिवर्स चार्ज ऑन जीटीए, ओके, टिक, नो इश्यूज, एंड यू हैव टेकन द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट पेड ऑन द रिवर्स चार्ज। सेकेंड एलिमेंट, सर डिपार्टमेंट आके बोलेगा कि यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन जीटीए, रिवर्स चार्ज यू पेड, फुल्ली फाइन, नो इश्यूज, बट फॉर क्लेमिंग द आईटीसी, द सेकंड लेग, you have to fulfill the conditions of section 16 subsection 2. The first condition of subsection 2 of section 16 is you must mandatory possess one tax paying document. अगर आपने बिल्टी के बेसिस में पेमेंट कर दिया, क्रेडिट ले लिया और सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाया, तो आप एलिजिबल ही नहीं है उस टैक्स की क्रेडिट लेने के लिए। I guess I made my point very clear that self-invoicing is a mandate. It's been 2017, GST implemented, 17, 18, 18, 19, 20 गया, 20, 21 गया, 4 साल गए. We all know how many of us has actually prepared self-invoicing. We all know, and it is very important. Trust me, sir, इस पे अगर आके वो रिवर्स कर देगा, अपने कुछ नहीं कर पाएंगे. Very important. राइट, नेक्स्ट, इनकम्प्लीट इनवॉइस। सर डायरेक्टर के मेल पे इनवॉइस है, कैसा इनवॉइस है? सर वो बंदे ने टैली से बना के भेज दिया, इज इट स्टैम्प साइंड? आई डोंट नो सर। जीएसटी नंबर इज देयर? आई डोंट नो सर। डेट प्रॉपर है? मुझे नहीं पता सर। दिस विल मेक इश्यूज। इट इज वेरी क्लियर एंड डिफाइंड व्हाट शुड बी द टैक्स इनवॉइस शुड लुक लाइक। इनफैक्ट अभी तो जो 50 करोड़ के ऊपर रजिस्टर्ड जीएसटीएंस है, they mandatory are required to issue e-invoicing. If I am a recipient and Sanjeev sir is a person who is liable to issue e-invoicing, and let's say by mistake Sanjeev sir missed issuing me an invoice, उन्होंने मुझे नॉर्मल बिल दे दिया, मैंने क्रेडिट ले लिया, सर डिपार्टमेंट ऑफिसर मुझे बोलेगा कि अभिषेक, आई एम सो सॉरी, यू आर लायबल टू लूज योर क्रेडिट्स, यू वर सपोज टू रिसीव
ई इनवॉइसिंग फ्रॉम मिस्टर कोठारी, उन्होंने नहीं दिया, वो उनको बाद में देखेंगे, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी. सो व्हेन वी आर टेकिंग क्रेडिट, प्लीज इंश्योर दैट द इनवॉइसेस आर कंप्लीट इन ऑल मीन्स, राइट. सर हम आज भी देख रहे हैं 4 साल बाद कि हमारे पास टैक्स पेइंग इनवॉइस है जिसका इनवॉइस नंबर इज 22 डिजिट. इट कैन नॉट क्रॉस 16 डिजिट्स. So there are good number of do's and not do don't do's in the rule prescribed with the invoices. We have to go and follow all the rules of the invoices, right? Specifically, I've mentioned construction service. Let's say I am chartered accountant. I have an office here. मैं सेकंड फ्लोर को भी रिनोवेट कर रहा हूँ, मैं वहां भी ऑफिस एक्सपैंड करूंगा. यहाँ मेरी कंप्लायंस टीम बैठेगी, ऊपर मेरी लीगल टीम बैठेगी. Now for that, I have taken all the, either I have given a subcontract to a contractor कि भैया तुम बना दो, फर्नीचर बना दो. Question to you is, क्या मुझे ITC मिलेगा? क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी सेज कि मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्रेडिट नहीं मिलेगा. राइट, बीइंग एन ऑफिसर आई विल ऑलवेज कम एंड से कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. बीइंग अ टैक्स पेयर, you should always keep in mind that there is a High Court judgment of Odisha High Court Safari Retreats. The Honorable Odisha High Court in the case of Safari Retreats have pronounced that आपको credit मिलेगा. They went to the Constitution, they have mentioned Article 14 and they have said कि आपको ITC मिलनी चाहिए. As of date, the judgment is went to the Supreme Court for and filed an SLP. The pronouncement from the Supreme Court is yet pending, but there is a school of thought कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन सर्विस का क्रेडिट मिल सकता है if it is in the course of furtherance of the business. So my point is, as a department officer, I will surely object, but as a taxpayer, you should also take your all precautions that वो cost में include करना है या नहीं करना है, right? Block credits, we have to be very confirmed on what are my block credits, right? I will give you 2 examples. सर मेरा काम है ये सूट बनाने का, जो मैं बंडी बना के रखा हूँ, मेरा काम है वो बनाने का. मैंने एक अलग लिनन मंगवाया सिंगापुर से, मैंने स्टिच करवाया 10,000 पीस एंड 100 पीस मैं बोला मैं फ्री में बांटूंगा, तभी मेरा बाद बाकी पीस बिक्री होगा. तो वो 100 पीस मैंने लेट्स से क्रिकेट टीम वाले को गए और मैंने बोला कि सर आप पहनिए, आप एंडोर्स करिए, इट इज ओके. माय पॉइंट इज ये जो 100 पीस जो मैं फ्री में बांट रहा हूं, क्या मुझे उसकी क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी? द फ्री सैंपल्स विच आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्या वो मुझे क्रेडिट डिसअलाउ करना पड़ेगा? सर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H specifically blocks the credit of free samples, despite that it is in the course of furtherance of the business. There is another school of thought. There is a extension to the schedule 1 item 1 saying that if you are disposing of any goods in which ITC has been claimed, it is a supply, treat it as a supply, आप उस पर टैक्स पे करो, वो अलग कहानी है. But restricting my discussion only to block credits, 17.5 is to be read very, very minutely. छोटी सी second example. सर अभिषेक अग्रवाल वेबिनार में आप लोगों को GST का डिस्कशन नहीं कर रहा है, वो कोलकाता में लेट्स से ललित में आप लोग सबको इनवाइट करता है कि सर प्लीज बी माय गेस्ट एंड अटेंड माय सेमिनार फिजिकली, राइट? Lalit is charging me 1,000 rupees plus GST as a bill, as an invoice for 2 times tea coffee and 1 high tea. 1 time high tea. वो high tea का टेबल लगाएगा लास्ट में और 2 बार चाय बिस्किट्स देगा. तो उसने मुझे बिल दे दिया 1,000 रुपए प्लस GST. ओके, फॉर मिनिमम 50%. परफेक्ट. मेरे गेस्ट आए 75 एंड आई हैव चार्ज माई गेस्ट 1,000 रुपीज प्लस GST एज अ डेलीगेशन फीस. 1,000 रुपीज ओनली प्लस GST एज अ डेलीगेशन फीस. सर अभिषेक अग्रवाल जो 1,000 रुपया डेलीगेशन का ले रहा है, उसमें वो क्या सप्लाई कर रहा है? उसमें वो GST का डेलिब्रेशन दे रहा है, उसमें वो नोट पैड दे रहा है, पेन दे रहा है, मास्क दे रहा है एक ठो, एंड 2 बार हाई टी, 1 बार हाई टी और 2 कॉफी का अरेंजमेंट करवा रहा है, so that all the guests can enjoy that, right?
My question to the audience, I'm opening my chat box. My question to the audience is, will Abhishek Agarwal will get the credit of the food bill issued by Lalit? Will Abhishek Agarwal will get the credit of the food bill, snacks bill, जो ललित होटल मुझे दे रहा है? No, 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 no. Yes, no, no, no. Sir, I am seeing all no's, only couple of, only, in fact, one yes. Answer is yes, मुझे क्रेडिट मिलेगा, मुझे क्रेडिट मिलेगा. मैं क्यों बोल रहा हूँ ये पॉइंट, ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? वी कैन नॉट जंप इनटू कि अरे भैया ये तो फूड है, क्रेडिट ब्लॉक कर दो, ऐसा नहीं है. वी कैन नॉट जंप इनटू डिस्कशन की डिसीजन की हाँ क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे. सर 17 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है प्रोवाइजो में कि अगर आप कोई खाने की बिल ले रहे हो और आप आगे खाने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको उसकी क्रेडिट मिलेगी. So Abhishek, you are not providing a service of a food. You are taking a service of a food and providing a GST deliberation. Sir, I am providing a GST deliberation, but in that package, I am providing you deliberation on GST. I am providing you food. I am providing you mask. I am providing you a notepad. I am providing you a pencil. So that is a package. The principal supply stands for the deliberation on GST. All other stands for ancillary supply, total composite supply. तो मुझे उस फूड बिल का क्रेडिट मिलेगा. So I rest my thought on this point here, but I am putting it that it is very important to examine all in this way. Sir, directors remuneration पे GST लगेगा क्या? Yes or no? Sunidhi, I've seen your question. It will be answered. Yeah. Directors remuneration पे GST लगेगा क्या? Reverse charge में. Last 1.5 साल से हल्ला होकर रखा है. No, no, yes, yes. Still getting yes and no. Still getting yes and no on this. Oh my God. So, if there is an employer-employee agreement between the company and the director, no RCM is to be paid. If there is no employer-employee agreement, then RCM is to be paid. Right? Notification 13/17 dated 28 June 2017 clearly says services given by the director to the company and a capacity of a director, उसी पे रिवर्स चार्ज लगेगा. सर, अभिषेक शंकर अग्रवाल एंड एसोसिएट एक लेट्स से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो मेरे प्रॉपर्टी पे ऑफिस खोल के बैठी है. इस प्रॉपर्टी के लिए वो अभिषेक अग्रवाल को 20,000 रुपए का रेंट देती है. नाउ Abhishek Agarwal, being a director of the company, is also providing a service to the body corporate. क्या इस सर्विस पे RCM लगेगा? I am repeating my question. It's not the remuneration. It's not the remuneration. मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, मुझे मिल गई, मैं अब इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया मेरी ही कंपनी में. मैं कंपनी में डायरेक्टर भी हूं, बट कंपनी इज पेइंग रेंट टू द डायरेक्टर. सर, सबकी कंपनी में ऐसे ही हो रहा है. My question to you is कि इस रेंटल पे भी क्या RCM लगेगा? Yes or no? अभी भी yes no आ रहे हैं सर. सर नहीं लगेगा. Now it's been 4 years. We have to go to the reasoning because officers तो बोलेगा लगेगा सर. With due respect, हमें मना करना पड़ेगा कि नहीं लगेगा. Sir, because Abhishek Agarwal is providing the rental service and that is not in the capacity of director. That is in the capacity of an individual. If a director is providing a service to a company, then RCM. If an individual is providing service to the company, then not a RCM. Very thin line of difference, very important. That is not the issue. Why I have written this, that is the issue. मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया जहां मैंने बोला कि जहां एक जगह लगना चाहिए, एक जगह नहीं लगना चाहिए. Okay, sir. I've given you 2 examples, among which one is subject to GST, second is not subject to GST. Think of a scenario where RCM was not liable and you continued in paying the RCM and taking the credit. You have paid taxes on RCM and you have taken the credit. As an officer, when I come to your office, I will say, sir, you were not liable to pay the RCM. Please go and
please go and claim a refund of it. Please go and claim a refund of it. You have taken excess ITC. Please reverse it with interest. Am I clear, sir? Reverse charge mechanism, two legs, independent. You were not liable to pay RCM. You paid from your pocket, your voluntarily thought process, not mine. Please go and claim a refund. Please go and claim a refund. And if you have taken the credit, it's a second school of thought. Go, reverse it with interest. Reverse it with interest. Right? I would request rather the management ki, please copy paste all the queries in an Excel sheet or in a Word file, or rather in a Word file itself. And when we complete the deliberation, just paste all the queries together in the chat box so that not even a single query is missed. Right? I'm seeing all the queries. I'm trying to put that in my deliberations, but whatsoever is missed, I will take it into that. Don't worry about it. So next, credit note received from the suppliers, secondary discount, incentive, price protection. जल्दी से बात करते हैं इसमें. I have given you product at the cost of 1,000 rupees. You are selling the product in the market at 950 rupees. The moment you achieve the target, you will get 100 rupees credit note from me. Clear? I'm selling at 1,000. You are further selling at 900 rupees. If you achieve a target of 100 pieces, I will give you a credit note of 100 rupees. So your cost price get reduced. If you go and open your balance sheet, in the balance sheet, you will see purchase still 1,000. Sales 900 rupees. Other income, incentive, discount received from the vendor, 1,000 rupees. So this other income is creating a profit. An officer can always come and say, why have you not paid GST on this other income? You are not at fault, sir. You are not at fault. Just have a proper reconciliations. I'm just giving two sections. 15 subsection 3. 15 subsection 3 talks about the provisions of discounts, where credit note can be issued, where ITC can be reversed. So all that points has to be taken care of for availing this, for ensuring that all things are at place. So credit note is to be properly issued and proper GST is to be reversed. Let's say you come to my store and say, Abhishek, your production, okay, in my example, I gave you one product at 1,000 rupees. My salesman visited your store and says, Ki Akhil sir, give me this prime shelf for display, and I will give you more 2% extra on all your purchase. So this extra 2%, I am never going to pay you in cash. I will give you a credit note. So sir, on this 2%, you are liable to charge GST because you are supplying a service for a consideration. So thin line of difference, one credit note GST not leviable, second credit note GST leviable. As an officer, I will definitely deep dive into all these things. Sir, you are let's say a distributor of a Century Plywood, right? And I created a scheme that if you sell this much product, I'll give you 1 lakh rupees bonus or incentive. That 1 lakh rupees supposedly was supposed to come through a credit note. But because of the change of management in the middle of the year, that 1 lakh rupees came to your bank account after deducting your TDS. You have to reconcile your 26 years. In case the TDS is deducted, please, sir, go and charge GST on the same. Century Ply has to pay GST to you. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख रुपए आपको इंसेंटिव मिलना था, उसने 10% TDS काट दिया, आपके 26 ईयर्स में दिख रहा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया. You have received a consideration. When you have received a consideration, you must have supplied something. If not goods, then service. What is not a good is always a service. So that is supply of service. You're liable to pay tax. Please charge GST on the same.
Very important, sir. Cross charge. I, Abhishek Agarwal, sitting at my head office in Bengal, hiring 50 employees for IT, HR, admin, having branches across 31 states of India, only having marketing office there. So whatever the salary which I'm having is production of the services which is distributed among all the branches. So the head office is supplying services to the branch office. Without consideration is liable to GST. Colombia Asia, Karnataka advanced tooling, very important, is liable to have a cross charge. If you're not doing it, we have to do it. Classification, sir, we can fight for decades. I am having a marker here. You name it, writing instrument. You name it a writing instrument, HSN is different, GST rate is different. You name it a plastic, a component of plastic, HSN different, GST rate different. We can have a full-on debate on this. Classification, you cannot continue saying after 4 years, कि my vendor is charging this and 5%, I will also charge 5%. सर आपका vendor क्या बांट मतलब छोड़ दीजिए उसको. You are bothered. मैं आपको audit करने आया हूँ, right? Exempt income. If you are having any exempt income, you have to do the common credit reversal. If you are having any exempt income, you have to do common credit reversal. Sir, in my business, we don't have any exempt income. All our clients say this. We are looking after the business accounts, proprietorship firm. Let's say Sanjeev sir have a proprietorship office. In the proprietorship office, he gives tally ka data every month to my office. I check, okay, everything is taxable. I am not an income tax person. I don't know how to file income tax balance sheet. But on the year end, I asked for his filed income tax statements. In that, I saw income from rental unit, a residential dwelling for a residential purpose, his ancestral property given on rent. His PAN number is having income of rental income, but that is a residential dwelling given for a residential purpose, so that is an exempt income. Since your GST number is having an exempt income, as per Rule 42, you have to do the reversals. You have to do the reversals. Very important. Income received for not doing anything, is it taxable? I will not close this. This is a very big discussion. मुझे कुछ नहीं करने का पैसा मिल रहा है, क्या ये taxable है? Schedule 2 says it is a service. Okay, fine. Schedule 2 says it is a service. But whether it is qualifying in the definition of supply or not is a different fight altogether. Right? I will just not close this particular discussion. Last, the GST turnover declared in your books, in your GST returns versus the turnover declared in your balance sheet, there must be a difference. You should be responsible to reconcile the same. You must be responsible to reconcile the same. Friends, this were the points which I have pointed out that as an officer, what would I do? With the permission of officer of Maharashtra, I am sharing this, just hold on. Okay, with the permission of an officer of Maharashtra, I am sharing this slide with you. This is 1718 and 1819 risk flags. So what are this? Please give proper attention on this. सर इनका ये चेक पॉइंट्स है कि ये सब अगर होता है तो वी कैन गो एंड कंडक्ट एन ऑडिट. मैं आपको अभी ले जाऊंगा, मैं आई विल टेक यू टू द एंटायर जर्नी ऑफ हाउ ऑडिट हैपेंस, व्हाई ऑडिट हैपेंस. मैं उसमें ले जाऊंगा आपको. मैं पहले आपको अभी ले जा रहा हूँ कि ऑडिट होगा तो डरना नहीं है पहला, और क्या क्या चीजों में ध्यान रखना है. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती है. वो कुछ कर नहीं सकते, वो बुरे लोग नहीं है सर, वो कुछ कर नहीं सकते. दे कैन नॉट हेल्प इन एनी अदर फैशन, राइट? See the 1718 risk flags. Sir, among this, I have highlighted few. If you can see the clause D, very high ratio of tax paid through ITC on total tax payable. आपने पूरे साल में 10 लाख रुपए का लाइबिलिटी रेंडर किया है, उसमें 99,000 was through ITC.
and only 1,000 was through cash. This is a parameter. I'm not saying that जो आदमी कैश में पेमेंट नहीं करता उसका ऑडिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम भी नहीं है. I'll come down to that. Please don't read this कि अगर ये हो जाएगा तो ऑडिट है, ऐसा नहीं है, एकदम भी नहीं है. It is only a pointer. I will complete the last line and you will get to understand. The taxpayer has filed more than 6 returns late. So timely compliance is a must. Timely compliance is a must. Sir, read the last line. The above risk flags will be followed by numbers 1, 2, 3, 4. उनको rating करनी पड़ेगी 1, 2, 3 या 4, which denotes the increase in risk level as the number increases. Thus, the risk level is in a category will be higher with increase in numbers. Accordingly, the level of the scrutiny in audit should be increased to more intense where the risk score is higher. So, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका 100% यहाँ पर पेमेंट ITC से हो रहा है, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया. अगर आपका रिटर्न सारा का सारा लेट फाइल हो रहा है, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया. नीचे टोटल किया 8 आया, आपका नंबर्स हाई है. सो मैं आपकी सोच सकता हूँ कि आपकी स्क्रूटनी आपके यहाँ डिपार्टमेंट ऑडिट करूँ, कोई दिक्कत नहीं. सिमिलरली 2018-19 का सर आया हुआ है, इसमें भी क्या है, वेरी हाई रेशियो ऑफ टैक्स पेड थ्रू ITC, फाइल रिटर्न्स लेट, filed less than 3 taxpayer has not filed returns minimum 3 returns, उन्होंने फाइल ही नहीं किया अभी तक. फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, फिर रिफंड्स. सो इफ any irregularity they will flag you as a risk flagger and accordingly they can come down for an audit. So nothing to worry on this altogether, but this was important to be shared. Now let me bring to you the provisions of the law, ki what powers we have, what powers the learned officers have, and how we have to move throughout this journey. Sir, till today the life was very different. 30 जून 2017 रात को 12 बजे बेल बजा, GST आ गया, right? We don't know what was happening with us. Till now we were shouting portal not working sir, मेरा staff चला गया, सामने वाला return नहीं भर रहा है. All has been history. Now when the learner officer visits your premises, you are answerable for what your ex staff did. आपका स्टाफ जो आपको छोड़ के चला गया है वो क्या करके गया है, आप रिस्पॉन्सिबल हो जवाब देने के लिए उस ऑफिसर को आज, right? Irrespective your CA is there, irrespective your CA is not there, but ultimately you have to face this audit. Okay, so it's a section 65 subsection 1 which says a commissioner, no one else, commissioner or any officer authorized by him, authorization zaruri hai sir, by way of a general or a specific order, all chartered accountants having turnover of 5 crore is subject to audit. General order. Abhishek Shankar Agawar and Associate is subject to audit. Specific order. So I don't know in the due course when we want to challenge this, whether we will be accessible to have this copy of order or not. But the law says commissioner or any officer authorized by him by way of a general order or by a specific order may. Sir, yehi game changing hai. The word used is MAY, may. It is not a mandate. So इसके पहले मैंने आपको जितने भी समझाया, जरूरी नहीं है कि वो हुआ और आपको आपके यहाँ ऑडिट आ जाएगा. वो होने के बाद भी डिस्क्रिशनल पावर कमिश्नर के पास है कि आपका ऑडिट होगा कि नहीं होगा. May undertake audit of any registered person, not an unregistered person. For such period, time defined होगा. July 17 से March 18, July 17 से March 19, time defined होगा. It cannot be open ended. And at such frequency, आज हो गया, 3 साल बाद भी होगा, 5 साल बाद भी हो सकता है. The frequency can repeat. So section 65 section 1 says the parameter, the boundary line कि आपका department audit कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या methodology होगा, right? Who can do the audit? Abhishek Agarwal sitting at Ultaranga having an office here
सर जब मैंने जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन लिया ना, तो मेरे जीएसटी प्रोफाइल में जाऊंगा ना, अगर मैं सर्च टैक्स पेयर में जाऊंगा, जीएसटी नंबर डालूंगा, तो मेरे मेरे डैशबोर्ड में दो चीज आएगी, सेंट्रल स्टेट। सेंट्रल में आएगा मेरा श्याम बाजार डिवीजन, स्टेट में आएगा मेरा श्याम बाजार डिवीजन, सेंट्रल में आएगा मेरा विधाननगर डिवीजन। इन दोनों में जहां पर भी लिखा हुआ होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वो मेरा जुरिडिक्शन ऑफिस है। और जहां लिखा रहेगा अदर, दैट इज नॉट माय जुरिडिक्शन ऑफिस। इट मींस सर, हिस्ट्री ये है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बता दिया गया था कि जो आदमी का टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, 90% will go to state, 10% will go to central. And the GSTians having turnover more than 1.5 crores, 50% will stay back to state and 50% will go to central. It means now it is done randomly. So my GST number having jurisdiction office at state. So who can do my audit? My audit can be done by the audit committee of state, not by central. So this has to be checked by us. It's not that they are wrong, but there might be a mistake. So हमें चेक करना पड़ेगा कि जो चिट्ठी हमारे पास आ रहा है वो स्टेट से आ रहा है, सेंट्रल से आ रहा है, right? I'm not getting you to the slides, but this is what is written, right? अगर मेरे ऊपर सेक्शन 65 में स्टेट ने ऑडिट चालू कर दिया, तो सेंट्रल वापस वही सीएमसी रिपीट नहीं कर सकता, राइट? खाली रिफंड्स में अलाउ है कि रिफंड्स में अगर मैं स्टेट के पास जाता हूं कि मुझे रिफंड दे दो, तो वो स्टेट का रिफंड भी दे देगा, एसजीएसटी का एंड वो सीजीएसटी का रिफंड भी दे देगा। ही कैन गिव मी रिफंड ऑफ बोथ द थिंग्स, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। दैट इज द ओनली चांस ऑफ क्रॉस एम्पावरमेंट। और एल्स मेरी ऑडिट अगर हो रही है तो स्टेट ही करेगी, बिकॉज आई एम फॉलोइंग इन द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट, राइट? नेक्स्ट, वेयर ऑडिट कैन बी कंडक्टेड। सर वैट रेजिम में डिपार्टमेंट में होता था, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज के रेजिम में डिपार्टमेंट टैक्स पेयर के ऑफिस में होता था। इन जीएसटी रेजिम, ऑडिट विल बी कंडक्टेड एट प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लीज नोट, इट इज नॉट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इट इज प्लेस ऑफ बिजनेस। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करते हैं। सर आपकी जहां पर ऑफिस है, यस। आपका ना वेयर हाउस है, यस। गोडाउन है, यस। सर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बुक्स मेंटेन करता है, तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्लेस में भी हो सकता है ऑडिट। सर माइंड इट, अखिल सर का डिपार्टमेंट ऑडिट हो रहा है। अखिल सर सेड कि अभिषेक इज द पर्सन हु इज मेंटेनिंग माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सो दैट ऑडिट कैन बी स्ट्रेस्ड टू अभिषेक अग्रवाल ऑफिस, एंड इन दैट ऑफिस with along with Akhil sir's books of accounts, Abhishek also maintains Sanjeev sir's books of accounts. यहां नहीं लिखा हुआ है कि अभिषेक के ऑफिस में आके सिर्फ अखिल सर का ऑडिट करेगा। यहां क्या लिखा हुआ है? द प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स द प्लेस वेयर टैक्स पेयर मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन एट अभिषेक अग्रवाल्स प्लेस। अब मेरे प्लेस में उनको जो भी मिलेगा वो ऑडिट कर सकते हैं। बिग क्वेश्चन इज दैट क्या वो मेरे प्लेस में आके संजीव सर का बुक्स भी टच कर सकते हैं? द लॉ इंडिकेट्स दिस because section 65 to use the word, the officers referred in subsection 1 may conduct audit at the place of business, right? Good point to ponder upon. What to do when we receive a notice? Now sir practical चीज कर रहे हैं कि आज एक नोटिस आ गया, you receive a notice under 65, what will you do? So Number 1, go and check who is the jurisdiction officer. Number 2, go and check क्या वो authorized आपको issue करने के लिए notice. Number 3, if it is coming from central, they are bounded with issuing DIN number, DIN, documentation identification number. सर कुछ स्टेट्स, केरला है, महाराष्ट्र है, कुछ स्टेट्स है जो स्टेट में भी DIN number मैंडेट कर दिया, अपने बंगाल में नहीं है। DIN is not a mandate for state officers of Bengal, right? So how do you check the DIN? Whatsoever DIN number is there, you can go in this link esanchar.cbic.gov.in DIN search, and you go and put that DIN number. You will get the entire history. Who is the officer? Who is assigned the power to him? What he can do? वो सबको मिल जाएगा. And this should be checked.
no offense. I believe today officers will also feel no offense on this if you humbly, sir, you have to maintain the decorum of humbleness because officers are not our enemy. They are performing their duty, we have to perform our duty. With humbleness, we can just go and check the din whether yeah everything is right or not, and whether we have any objections that no sir, this notice cannot be issued by you on us. Then we can go and always check a din. We have to check कौन सा पीरियड का ऑडिट हो रहा है. लेट्स से जुलाई 17 से मार्च 18 का ऑडिट हो गया. नेक्स्ट ईयर ऑडिट हो रहा है अगेन जुलाई 17 से मार्च 19 का. वी कैन ऑलवेज से कि सर जुलाई 17 से मार्च 18 का ऑडिट हो गया, तो you don't need to repeat it. You can only do the audit of April 19 to April 18 to March 19, right? So period is very important. Third, location of the audit. Whether the officer wants to do the audit at their desk only, whether the officer want to extend the audit to your premises also, and whensoever you receive a notice, there should be a minimum lag of 15 working days. That after this days, I will start the audit. So this 15 days is a must. So ये सब pointers बहुत जरूरी है. That if we want to challenge the notice, we have to challenge it now. We cannot obey the notice and challenge it on this point later on. तो अगर आपके पास नोटिस आता है तो डरिए मत, अरे बाबा नोटिस आ गया, ऐसा नहीं है. सीए को भेज दो, ठीक है, आप भेजो सीए को, कोई दिक्कत नहीं है. बट यू आर मैच्योर इनफ टू टेक दिस कॉल व्हाट टू डू विद दिस नोटिस. This is a preliminary 5 minutes assignment which you should conduct and then react on the notice. Right? Next. सर ये ऑडिट चालू कब होता है? नोटिस आ गया फिर नहीं. ऑडिट चालू होगा when you submit all the documents to the officer or when the officer visit your premises, whichever is later. I repeat, 65K, the notice was issued under 65 to you. You have given all the documents asked. After reviewing the documents, officer gave you further 10 list. After giving that 10 documents, after give you again 5 list. And you are continuing submitting papers. So till the moment you submit all the papers, the date you submit all the papers, or the date officer visits your premises for conducting an audit, whichever is later is the commencement of the audit. Audit चालू होगा तब जब आप सब पेपर जमा कर दोगे या ऑफिसर आपके प्रेमाइसिस में आएगा, whichever is later. So it means आज ऑफिसर आ गया और बोला कि ये सब पेपर लेके मेरे ऑफिस में आ जाओ नेक्स्ट वीक. आप लेके गए, बोला नहीं नहीं ये 10 इनवॉइस मिसिंग है, लेके आओ. जब तक वो 10 इनवॉइस ही नहीं आया, ऑडिट इज नॉट इवन कमेंस्ड, ऑडिट इज नॉट इवन स्टार्टेड. सो section 65(4) says commencement of the audit is very important. Why? Because completion of the audit is connected with the commencement of the audit. We'll come into it. Sir, ऑडिट जब हो रहा है तो आपको क्या करना है? एज अ टैक्स पे आपको क्या करना है? You mandatorily, this is the provision of the law, you cannot contravene. You mandatorily have to give the facility to verify the books. आप इनको कॉन्फ्रेंस रूम दे दिए या फिर अपना ही प्रेमाइसिस में एक जगह दे दिए कि वहां पर जहां पर वो बैठ पाए, सारा बुक्स वगैरह चेक कर पाए. एंड यू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड वेंडर असिस्टेंस to the officer for conducting the audit. This is the provision of the law and you cannot dare to mislead this. Right? ये law में लिखा हुआ है. Okay. Sir, वो क्या चेक करेगा? वो क्या चेक करेगा? वो सेक्शन 35 का अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चेक करेगा. वो रूल 56 के तहत जो अकाउंट्स मेंटेन करना था वो सब चेक करेगा. So this two only rules, section 35 and 56, can be discussed 7 hours. What so documents, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करना है, इसमें हर चीज के बारे में बारीकी से लिखी हुई है और वो आपको मेंटेन करना है सर. और ऑफिसर वो हर चीज मान सकता है जो 35 and 56 के तहत लिखा हुआ है. So this is very serious and this is very important. राइट. सो व्हाट आई एम सेइंग यू, अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि ऑफिसर अगर आपके प्रीमाइसिस में आएगा तो एज पर लॉ आपको क्या करना है, आपको उनको अरेंजमेंट करके देना है कि हाँ भैया ये बुक्स है, आप चेक कर लो. कौन सा बुक्स, क्या पेपर्स, सारे चीज
जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है या रूल 56 में मेंशन्ड है. राइट. नेक्स्ट सर, देयर इज जीएसटी एक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सेक्शन 65 रूल्स. ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड जीएसटी ऑडिट मैनुअल. दिस इज टू बी रेड इफ यू आर हेल्पिंग योर क्लाइंट्स, और अगर आपके यहाँ ऑडिट आ रही है तो. All the department officers are following this GST audit manual as a Bible while conducting GST audit. So ये CBIC ने 2019 में इशू कर दिया था GST audit manual, GSTM बोलते हैं हम लोग इसको. एंड ये तो सेंट्रल हो गया, इंडिविजुअल स्टेट भी बना रहा है. बंगाल में बन रहा है अभी भी, कर्नाटका ने इशू कर दिया. So GST audit manual is a very important document, or rather important publication, which we all should move through to understand the intent of the law. And what Sandeep sir in the starting pointed out, the fight of books and 2A 2B reconciliation. To my knowledge, solution uska usi audit manual mein mila mujhe. When I went through the audit manual very intensively, then I found the solution of the same. I will discuss. So through that audit manual, we can divide the entire audit process. अब सर मैंने जो भी बोला ना, एक बार भूल जाइए. Whatever I have said you till now, please blank your mind. Now understand what is the functioning of the audit. अभी तक I only share the preparedness of the audit, how you should prepare yourself, who will come to your premises, what you have to do, what they can do to you, वो सब चीज था. अब मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ, एक अभी स्टार्ट करना पूरा प्रोसेस. What it is? सर, मैं आपका एक डिपार्टमेंट ऑडिट, आपका जीएसटीएन चूज किया, योर जीएसटीएन हैव बीन चोजन फॉर जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट. फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट ऑडिट वी एक्सटेंड टू conclusions. Let's say we extend to this following 5 steps. Number 1, taxpayers profiling. सर ये 1 2 3 जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा उसके बारे में. सो लेट्स से मैं अभिषेक अग्रवाल का ऑडिट करने आ रहा हूँ, तो अभिषेक की जीएसटी की पूरी प्रोफाइलिंग बनती है. वो कौन है, क्या है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कहाँ रहता है, कहाँ रजिस्टर्ड है, कब रजिस्टर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास केवाईसी के, उसकी क्या फिगर्स है, 17 18 18 19 19 20 20 21, टोटल चीज इन डिटेल ऑफिसर्स के पास अवेलेबल है. नेक्स्ट वो आपसे डेटा मांग लेता है. डेटा मांगने के बाद वो डेस्क रिव्यू करता है. तो लेट्स से संदीप सर इज ऑफिसर, वो सारा डॉक्यूमेंट में से मंगवाने के बाद अपने डिपार्टमेंट में बैठ के सारे अपने एक्सपर्ट्स के साथ मेरे पेपर्स में डीप डाइव करेंगे एट हिज डेस्क. He have full authority, he has full discretionary power to decide whether to complete the audit at his desk only. If he thinks that no, I don't require to visit Abhishek place, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं, full power. डेस्क रिव्यू में क्या क्या होगा एनालाइज करेंगे, जितने भी ऊपर की चीजें हैं, और 3 4 5 को इंटेंसिटी वो भरेंगे. सर जब आप डेस्क रिव्यू वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, so there is a paragraph in the GST audit manual issued by CBIC 2019, para 5.8.3. सर इसमें क्या लिखा हुआ है, आस्ते से पढ़ते हैं. That when there is a difference of GSTR 2A and your books of accounts, GSTR 2A में 100 रुपया है और बुक्स में 150 रुपया है. लेट्स से हर इनवॉइस 10 रुपया की है, तो 10 इनवॉइस दिख रही है 2A में और बुक्स में 15 इनवॉइस है. सो अब जो ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑडिट में आ रहा है वो क्या करेगा? 5.8.3 says carry out a test check of the invoices of such suppliers whose details are not figuring in 2A and identify some of such suppliers with high tax value. Okay, ऑफिसर को बोल रहा है कि तुम रिकंसाइल करो, क्वांटिफाई करो, जितने इनवॉइसेस पेंडिंग है उसमें से रैंडमली चूज करो कि कौन से हाई पेइंग वाले टैक्स वाले बंदे सप्लायर्स है. ठीक है, एंड गेट द पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स पेमेंट वेरीफाइड एट द सप्लायर्स एंड. सर इसका मतलब क्या हो रहा है?
अखिल सर ने संजीव सर को माल सप्लाई किया 2017 अगस्त। उस टाइम में जीएसटी 1 2A का कंसेप्ट नहीं था सर उस टाइम। कोई भी कारण से उनके संजीव सर के जीएसटी 2A में नहीं दिख रहा आज, कोई भी कारण से, फॉर व्हाटसोएवर गुड रीजन। अगर मैं संजीव सर को ऑडिट कर रहा हूं तो इट्स मेरी ड्यूटी कि मैं उनकी बुक्स और 2A को रिकंसाइल करूं, उसमें से इनवॉइस निकालूं, अखिल सर के पास मैं जाऊं, संजीव सर को नहीं भेजूं। I have to go and get the particulars of the tax payment verified at the supplier's end. Sir, is it solving the hue cry कि क्या होगा 2A में नहीं है बुक्स में है? Is it giving a small ray of hope कि देखो ये हमारा जिम्मा है ही नहीं कभी? Sir, coming to the recent judgment of Madras High Court, D.Y. Bethel Enterprises, the Honorable High Court of Madras pronounced that you can always come and ask, you can always come and demand the recipient to pay taxes if he has not availed as per section 16. आप हमेशा आके बोल सकते हो कि please pay back the tax. Yes, but before doing that, you have to go and do the proceedings against supplier. You cannot leave the supplier and straight away jump to the recipient and ask for money. You have to go and ask because it is proved that the supplier is the one who is in the contravention of the law. Supplier is the one who has not deposited the money to the government. First, proceedings on him should be conducted, and then it should come to the on the recipient. But अभी कुछ और हो रहा है सर, उसमें डिस्कस नहीं करते हैं। डिस्कशन बहुत मजेदार हो जाएगा। We'll love to discuss the same on ITC only for 2 hours, 4 hours or rather. But एक बार इसको यहीं क्लोज करने की कोशिश करते हैं कि 2A 2B, I said in the earlier session, portion that it is important. 2B is very important, but also consider 2A. Secondly, if it is not available in 2A also, don't panic. What officers can do as per GST audit manual, I have disclosed. What you can take a plea that in the Honorable Madras High Court judgment is pronounced that first supplier is to be questioned for the taxes not to be paid. Straight away, I'm not responsible for paying the same, right? Sir, taxpayers profiling हो गया, desk review हो गया संजीव सर के ऑफिस में। फिर संजीव सर एक ऑडिट प्लान बनाएंगे। संजीव sir is my officer. Now he will create an audit plan. He will go to his office, to his senior, and get it approved. And then only he will start the audit verification. So, sir, you are also binded with many provisions. Taxpayer profiling होगा, desk review होगा, audit plan होगा, audit verification होगा, उसके बाद audit conclusion होगा। आपका audit conclude होके monitoring committee में जाएगा. So this committee sits every once in a month. And then ADT 02 will be issued to the person जिसका audit हुआ, to Abhishek Agarwal. So this is the structure. How will audit be done? Right? खाली इसको और एक बार डिटेल में घुसने के लिए just see the list of the annexures. Very important. So this list of 14 annexures gives us a insight कि how much the learned officers are working hard, how much the learned officers are prepared. Trust me, sir, they are much more prepared than us. So the annexure 1 is the master file which they already have even before issuing you a notice under ADT 01. वो 65 का नोटिस भेजने के पहले GSTM annexure 1 उनके पास readily available है, तो you answer them or not, they have every detail of yours. Annexure 3 documents जो मांगेंगे आपसे. Annexure 4 very important, sir, ratio analysis. They in the format of the annexure 4, if we deep dive the annexures, they have ratios which they will compare. This is the ratio which we discussed in the Excel sheet also, that ITC से पूरा liability set off हो रहा है 99.99%. Ratios are very important. Annexure 5 comparative charts. So what this will be? वो ये बताएगा सर कि आप 3CD में जाके ये टेबल नंबर से ये वाला फिगर निकालो, GST 9C में जाके ये टेबल नंबर से ये वाला फिगर निकालो, दोनों को कंपेयर करो,
The Annexure 5 is in so much detailed format. The officer have readily available कि भैया आप 3CD रिपोर्ट दो, खोलेगा रिपोर्ट निकाल फिगर डालेगा 9C दो, टेबल नंबर लिखा हुआ है डाला, that's it. They don't have to do, they are very much prepared. The entire SOP is ready and they have to fill all those things. They have to submit all the annexures. Audit plan, verification, everything will be done. Sir, if you go last 3 annexures, annexure 12, 13, 14, very important. Annexure 12 says list of local risk parameters. What it means? महाराष्ट्र में जाएंगे तो ये गलतियां मिलेगी, केरला में जाएंगे तो ये पैटर्न की गलती मिलेगी, बंगाल में जाओगे तो ये पैटर्न की गलती मिलेगी. तो लोकल रिस्क वो भी उनका भी एसओपी बनाया हुआ है. नेक्स्ट, only for traders they have a checklist. Only for composite dealers they have a checklist. We should not be surprised that in the due course they come down to a checklist for us for industry wise. कि ये वर्क कॉन्ट्रैक्टर इनका ये चेकलिस्ट है, ये सर्विस ऑपरेटर्स इनका ये चेकलिस्ट है. तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज. सर, माय पॉइंट इज दे आर सो मच प्रिपेयर्ड, राइट? तो दिस इज अ स्मॉल जस्ट इंडेक्स कि उनका क्या एनेक्सियर्स होने वाले हैं. सो कमिंग बैक टू द प्रोफाइलिंग ऑफ द ऑडिट. सर वो आएंगे, वो ऑडिट प्लान के संग आएंगे, सब कुछ चेक करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, आपसे क्लेरिफिकेशन मांगेंगे कि सर आई हैव अ क्वेरी दैट you were liable to pay tax on RCM since आपने TDS 192 में नहीं काटा है, आपने 194G में काटा है. Let's say. So you clarify. If the auditor is satisfied, okay. If not satisfied, वो मॉनिटरिंग कमेटी में रिपोर्ट करेगा, ADT 02 आपको देगा एंड आपको बोलेगा कि आप टैक्स पेमेंट करिए विद इंटरेस्ट. आप बोलते हैं नहीं, आई डोंट एग्री, आई विल नॉट पे. तो वो क्या कर सकता है? वो आपको बोलेगा नहीं, यू पे. वो बोलेगा नहीं, आई विल नॉट पे. तो ही विल स्ट्रेट अवे डू सबमिट ऑल द रिकॉर्डिंग्स टू योर ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर. सर, ऑडिट कौन कर रहा है? ऑडिट कमिटी कर रही है. ऑफिसर फ्रॉम द ऑडिट कमिटी इज कंडक्टिंग द एंटायर ऑडिट. The last findings will be submitted, will be communicated to the jurisdiction officer. Sir, if you can see annexure verification for, sir, annexure 10. If you can see annexure 10, format of letter to be written by the registered person under 73(6). So, अब क्या हो रहा है सर? ऑफिस ऑडिट कमिटी ने जुडिशियल ऑफिसर को लेटर लिख दिया, जुडिशियल ऑफिसर ने मेरे ऊपर शो कॉज इशू कर दिया. अब मुझे रिप्लाई करना है उन चीजों के बारे में. सो आई एम कनेक्टिंग अगेन. मैं इस पूरी चीज को एक बार कनेक्ट करूंगा, खाली कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट के बारे में बता रहा हूं. द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट मैंडेटरली शैल बी डन विद इन 3 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट. एंड वी ऑल नो कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट इज paper submitted, the date of visit, whichever is later. So 3 months from that date the audit will be completed. And if the commissioner is satisfied, then it can be further extended to 6 months, right? Otherwise 3 months में आपको audit complete करना ही पड़ेगा. And ADT 02 से आपको communicate करना पड़ेगा टैक्स पेयर को कि क्या डिस्क्रिपेंसीज है. ओके. तो सर क्या हुआ? ऑडिट ऑफिसर्स ने आपको बताया कि सर ये सारी डिस्क्रिपेंसी है. ऑप्शन 1 आप मान गए, आपने पेमेंट कर दिया. ऑप्शन 2 आप नहीं माने और जबरदस्ती मैंने आपसे पेमेंट करवा दिया. द मोमेंट यू पे नेक्स्ट मॉर्निंग पे अंडर प्रोटेस्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग put it on written papers that I have paid on under protest. I want a refund back. Please go and protest. Third, ऑफिसर ने वो डिस्क्रिपेंसी को उठा के आपके जुरिडिक्शन ऑफिसर को दे दिया. आपके जुरिडिक्शन ऑफिसर ने आपको शो कॉज नोटिस दिया. अब सर बात करते हैं शो कॉज नोटिस के बारे में. 2 स्लाइड है, इंपॉर्टेंट है. सर शो कॉज नोटिस में क्या बोल रहा है? A show cause notice can be issued under 73 or 74. If it is
by reason of fraud or willful misstatement or suppression of facts. अगर मैंने चोरी की है, अगर मैंने कोई चीज छुपाया है, तो 74 के अंदर नोटिस इश्यू होगा, अदरवाइज 73 के अंदर होगा. So there can always be interpretation mistake. There can always be understanding mistake. There can always be a bona fide mistake. So what I said, there can always be a bona fide mistake. It means whensoever a mistake happens, please put it on record. Please put it on record, at least in the internal mail, if required, to the officer, that this is a mistake happened. GST 1 में एक zero गलती से चला गया. We are not liable to pay this. So that कल आप अपना बोनाफाइड प्रूफ कर पाए. आप हमेशा 73 के अंदर नोटिस मिलेगा, 74 के अंदर नोटिस नहीं मिलेगा. सो अगर ऑडिट में कोई डिस्क्रिपेंसी निकलता है, वो आपके ऑफिसर के पास जाता है और वो ऑफिसर आपको शो कॉज देता है, तो वो आपको 73 के अंदर तभी देगा जब आपका चोरी का इरादा नहीं था, राइट? वो बोनाफाइड होगा तभी वो 73 के अंदर देगा, अदरवाइज 74 के अंदर देगा. अब देखिए क्या डिफरेंस है. अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं शो कॉल इशू करने के पहले, तो कोई पेनल्टी नहीं लगता है. सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नो वन कैन डिनाई दैट, बट कोई पेनल्टी नहीं लगता. But the moment 74 अगर इन्वोक करता है, तो even before the show cause, if you pay, then also you are liable to pay 15% of the tax amount as a penalty amount. Similarly, if you pay within 30 days, no penalty if issued under 73. If issued under 75, 74, 25% penalty. 30 days of the order, 10% of the tax for 10,000 which is higher, and in 74, 100% of the tax amount. इसका मतलब क्या है सर? 100 रुपया टैक्स, 17-18 का बता रहा हूँ, 18% की इंटरेस्ट, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 4 साल इंटरेस्ट, तो मोटा मोटी 80% इंटरेस्ट और 100 रुपया पेनल्टी. तो 100 रुपया का गलती अपने को 280 रुपया ले लेगा सर हमसे. 100 rupee tax will now comes up to 280 rupees, right? This is the hue cry of the mistakes done by our junior, which has to be borne by us, right? सर इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सब बिजनेस ओनर्स के लिए. लास्ट लाइन है मेरी. किस दिन तक भगवान का नाम जपना है? टिल व्हाट डेट वी शुड प्रे गॉड कि भगवान हमारे यहाँ तो चिट्ठी नहीं आए. तो सर नो टाइम लिमिट इज देयर फॉर डिपार्टमेंट ऑडिट, बट अ टाइम लिमिट हैज बीन ड्रॉन फॉर इशूइंग अ शो कॉज नोटिस. इट बाय डिफॉल्ट मीन्स कि इस नोटिस के पहले ही ऑडिट खत्म करना पड़ेगा. ये अगर नोटिस इशू करना है उसके पहले ही ऑडिट खत्म करना पड़ेगा. सो फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, if a notice is going to be issued under 73, so the last date in which you can expect the notice is 4th or 6th November. So let's talk about Bengal. So Bengal का GST 9 का ड्यू था 17-18 का 7th February 2020. तो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा 6 नवंबर 2022. 6 नवंबर 2022 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो शो कॉज नोटिस, जिसका जो नोटिस है इसका ऑर्डर आ जाएगा मैंडेटरीली बाय 6 फरवरी 2023. तो सर मैं आपको साइंस बताता हूँ, 3 इयर्स गेम होता है. तो 7 फरवरी 2020 ड्यू डेट था GST 9 का. इससे 3 साल तक ऑर्डर पास हो जाना चाहिए अगर 73 के अंदर हो तो 3 साल खत्म कब हो रहा है सर? 6 फरवरी 2023. 6 फरवरी 2023 के पहले 6 नवंबर, तो 9 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीना पहले शो कॉज नोटिस इश्यू हो जाना चाहिए था. सो टू सम अप, आपकी ऑडिट खत्म होके नोटिस इश्यू हो जानी चाहिए थी 17-18 की जब भी होनी है, तो लास्ट डेट इज 6 नवंबर 2022. अगर डिपार्टमेंट बोल दे कि नहीं चोरी चमारी इन्वॉल्व है, यू हैव डन अ मिस्टेक फ्रॉडुलेंटली, then this date extend to 6th of August 2024 for financial year 17-18. For financial year 17-18, if there is a mistake proven by the department that it is a fraudulent mistake, then you can expect a notice till 6th of August 2024. For 18-19, similarly, the date is 30 June 2025.
And for 1920 also, the date is 30 September 2025. So till this moment, entire audit will be happening, entire notices will be coming down. So, sir, to sum up my entire deliberation, first, we should not panic. This is merely a department audit. It's merely a procedure. It is to be thought differently from assessment, from search, seizure, investigation, arrest. Alag hai. And after the audit, if there's any discrepancies and we have a contradiction, then only the adjudication process starts. Then only the show cause of 73, 74 come into picture. And then only this entire happening takes place. So gracefully, rather, we have to face the officers. And trust me, sir, I know both the sides. These officers are much more prepared, and to my knowledge, they are pretty humble and pretty cooperative. If they know this provision of the law is having a doubt, they will give you a benefit of doubt. If they know that they have been instructed to hold on, that they will definitely pass, and you can always get the decisions in your favor with the in the upper levels. So with that, I conclude my session, and I thank each and every one of you to have this patience hearing. And as I promised, I can jump to the chat box for all the Q&A, and as you guide, sir, we can have we can request everyone to switch on the mic and ask question one by one, or I can go on chat box and keep on answering the questions. So I think Abhishek, thank you so much for the deliberation. And the best way will be to check the chat box and reply, because this being in the webinar mode, it will be too difficult to allow each and everyone to answer. And before you start, sir, let me recognize the presence of our trustee, Sri B.K. Jhajaria sir, our one of the prominent chartered accountants, CA Nirmal Kaushik ji, who is present in the participants. Thank you so much for your presence, sir. Your presence will definitely boost our morale. Over to you, Abhishek ji. Please continue. Thank you, sir. Thank you. So I'm having some questions in the Q&A box. If in a particular month 100 is showing, okay, I will read it here. It's okay. If in a particular month of rupees 100 is showing in my 2B and I am availing only 70, then the rest 30 may I take in the next month? Sir, let's say in the month of January, if 2B is showing a figure of 100 rupees and you choose to take 70 because for a very valid reason, you have received the goods in the next month. So I will frame this way. Abhishek have sent you goods of having ITC 100 rupees, but you have received the goods in the next month. But since Abhishek have invoiced in let's say in the month of January itself, your 2B of January will show 100 rupees. But since you have received the goods in the month of February, as per section 16, you are liable to take the credit only in the month of February. So despite the figures are available in 2B, you are not supposedly eligible to take the credit. So you have to leave the credit in the month of January and take the credit in the month of February. So at the time of taking the credit in the month of February, it is quite obvious that your GSTR 3B will be red, because you are taking the credit more in GSTR 3B of the month of February as compared to the GSTR 2B of February. So no issue if you receive a notice, just be humble enough to reply. Friends, an important point is to be taken care of. Do not be in an attitude or overconfidence that you don't bother to reply the communication of the department. Don't do this mistake. You have to acknowledge any communication, any notice of the department. If you have a doubt that this officer cannot issue a notice, put it in writing and submit to the officer. If you have a doubt that this question cannot be asked under this section, let's say, I can always object, sir, under section 61, you cannot ask me this question. Fine, put it on paper. But don't have this daring, rather,
not to answer them at all, not to acknowledge them at all. Don't do that. There will be legal consequences, right? So to answer your question, yes, you can do it, and nothing to worry on this. Sir, was entry tax paid eligible as transaction credit? So it's a due fight. With this limited question, what you ask, I cannot say yes or no. It's a total fight. Entry tax is a different tax regime altogether. Section 140 have a list of taxes which got subsumed in GST, and in that entry tax is not coming. Please focus once on ITC 04. What is the penalty provision? Sir, ITC 04 is something which is most neglected one, I would say. And I know good number of players in the market who has not filled ITC 04, and but yes, sir, it is. What is ITC 04 for the benefit of the common people? I'm sharing. If a person is sending goods to a job worker for processing of goods, that goods is to be returned to their premises within 1 year. And if a capital goods or machines are sent, that capital goods has to be returned within 3 years. So this going of this outward supply of goods without raising an invoice, without paying off a tax, and on a delivery challan, and returning of these goods, finished goods, let's say rather, all this movements has to be recorded, and a quarterly return is to be submitted in ITC 04, right, by all the manufacturers. Very, very important, sir. Very important. If you are missing this, you are doing a contravention of law. Only fact that filling of this ITC 04 is very tough won't save you from the penalty provisions. I believe it is very tough, but that won't save you from the consequences rather of the department, right? So I am starting the chat box queries now. Okay, e-waybill can also be generated for other than supply, say inward supplies. In that case, will the reconciliation be done by the department, because doing reconciliation with the e-waybill portal is difficult? Sir, ma'am, e-waybill reconciliation will always be tough. And we have to understand this fact that, let's say if I'm having a location in 30 states, so my movement is happening across 30 states. It is not feasible for one person to do the reconciliation. And trust me, the officer will also not take the pain. Officer will ask you to do it. Allow me to correct this. The annexures which I showed you, the onus, the liability to fill this is of the officer. We only help them filling this as in a matter of internal bonding. But the liability, rather, this annexures has to be filled by the officers only. But officer can always come and instruct you that I want a reconciliation working of e-waybill. You can always say that this e-waybill, you can see it's an inward supply. This e-waybill, let's see, it's a delivery challan, movement to the job worker. So that definitely dissections has to be maintained by your team. Next, the audit officer has all back office data and reconciliation with returns, e-waybill, invoicing, and other records, mismatch items with him, which the taxpayer may not know, and will conduct audit only with base data. So this is the comment which honorable officer from South is putting in the chat box. Thank you, sir. He's intimating all of us that all the data is already available with them, right? You don't need to worry about the reconciliation. They will let you know what is the reconciliation issues. Thank you, sir. Okay. The audit officer will have the mismatch item with difference to 1 and 2A and 2B, if there is any, and the audit officer will ask for reason to reverse, which will also attract penalty. Okay, thank you, sir. Okay. What if bill of entry is filed in last month and I have received the goods in the next month? Sir, you have received the goods in the next month, then only you can, the next month you are eligible to take the credit. Sir, please tell whether we should go credit cumulatively ICS or not. No, ICS separately. If credit taken for 3 months, I'm not connecting this. I'm not able to connect this. Okay, sir, please tell whether we should go credit cumulatively ICS. Okay, so credit is not to be taken cumulatively to my mind. IGST, a different calculation, CGST different calculation, SGST different calculations. Because on a lighter note, हमारे यहाँ ममता दीदी और मोदी जी ये दोनों का पॉकेट बहुत डिफरेंट है. So
कोई शेयरिंग नहीं होता है. It has to be calculated on a separate basis, different basis. Okay. Yes, no. Okay. Okay. Local tempo fare, he didn't give me C note. We will give RCM and take input. Local tempo fare, he didn't give me the credit, the consignment note. We will give RCM and take input. Again, you will fall in the trap. Since it's a local tempo wala and not a GTO, he will not give you any consignment note or bill T. Since he's not giving you bill T, you are not taking service from a GTA. You are not liable altogether to pay tax on RCM and take the credit. If you have paid the same on RCM and taken the credit, as officer, I will always ask to go and claim the refund of RCM and reverse the credit with interest. Right? So please tell whether we should go. No. Achha. Okay. So okay. Okay. Sir, my question is that e-invoice modified or not? So e-invoice, different discussion altogether. Modifications allowed till certain hours, post that not allowed. Okay. So that's it. I've answered all the query. To only conclude, I will just put one line. Sir, how to... Sir, one question. Yes, yes, sir. Yes, sir. Sir, as you have clarified regarding bill of entry, you know, taken bill of entry in this month and the material arriving at our premises next month. So we'll take credit next month. It's very well understood. But, you know, it is being found in many cases that IceGate is not filing the return and they are not filing the return. So bill of entry are not shown in to be in the respective month. In that case, what needs to be done? Sir, you understand my point? Sir, we can always okay. Now let me go outside the shoes of officer and let me take the shoes of hardcore consultants. Yes, yes. Sir, Rule 36.4, Rule 60, to my limited knowledge, is ultra vires. No rule can be framed challenging the act today. A rule cannot supersede an act. Today, Section 16 only gives out the conditions fulfilling which you are eligible to take the credit. Number one, you should have a tax invoice. Number two, you should have received the goods or services. Number three, the person, I don't know how come, but the person has paid the tax to the department. How would I know? And number four, we should file the returns. My point is, how would we control that that person have shown the returns invoices in their returns or not? They have given the government the KYC documents while taking the registration. They have given their Aadhaar card, PAN card, XYZ. Now, to my eyes, to my knowledge, if I am paying my vendor the tax component, that the vendor is no one else, nothing else but an agent of the department who is collecting the tax from me and paying to the department. Now you replace it to the IceGate, now you replace it to the vendor. I don't mind. Sir, if the person who is sitting in the IceGate is not complying with the provision of the law, this act cannot forbid my entitlement right of taking the credit. So a litigation, a reconciliation rather can always follow, but that won't stop you from taking the credit. For sure, for sure. If you are having the bill of entry filed, every document's clearly done, please create it. Sir, you can think of a scenario when it is done by the SEZ developers. When the goods are moved from SEZ to DTA, this is happening on a very frequently basis. Very frequent, very frequent. That is again a same concern. In fact, I was coming to that only. That is very frequent for SEZs. Exactly, sir. Exactly. Sir, there are a couple of more questions. Okay. Which will be the date of sale of export, shipping bill or bill entry? Sir, export उस दिन होगा जिस दिन कस्टम फ्रंटियर क्रॉस कर रहा है. इवन द इंडिया का नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर रहा है, उस दिन एक्सपोर्ट होता है. राइट. बिल ऑफ एंट्री वो होता है जब अपने माल इंपोर्ट करते हैं तो अपने कस्टम क्लियरेंस से जब माल निकलवाते हैं तो वो बिल ऑफ एंट्री होता है, माल इंपोर्ट करते वक्त. और एक्सपोर्ट करते वक्त शिपिंग बिल फाइल करते हैं. राइट.
Suppose one party files GST1 with IGST rupees 1000 in April, but we take it in the books in May. We'd have to not any other input. 36 for implies. 36 for always implies next month you can take the grade, not an issue. If a person say at night in the official purpose at hotel, then ITC will be available on his or dinner bill. So the whole purpose is you went in the hotel to have a dinner or to have a stay. Since you want to have the principal supply was to have a stay and the dinner bill was complementary and the bill is combined in the composed supply, you can take the credit. Going strictly, you have to divide and you are not entitled to take the credit of the dinner. Sir, this brings to me a very humble suggestion rather to all the business people sitting here. GST is nothing but a proper accounting which we have to practice on a daily basis at our office. We cannot continue to say अच्छे आदमी नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते, हमसे ये नहीं होता है, my most ignored portion is my accounts. We cannot afford to continue saying all these things, right? अच्छे लोग नहीं मिलते, right? Hire consultants, hire auditors, hire, I don't know, put whatsoever checks you want, but you are responsible when the officer comes and asks question to you. And 99, trust me, friends, 99% of the query can be resolved then and there only if you have a proper SOP, proper systemized accounting. अगर आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस सही है, अगर आपके रिटर्न्स भरते वक्त वो 12 चीज जो आपने बताया वो चेक हो रही है, the war is already won, right? So that is my humble suggestion to everyone. Thank you for the patient hearing. Over to the management. Very, very well said, sir. With all this, may I now request Sri Akhil Santalia to propose a free vote of thanks. Thank you, Sanjeev ji. On behalf of the chamber and also on my own, it gives me a great pleasure to propose this vote of thanks. Even after the introduction of GST nearly four years back, business entities, particularly MSMEs, are still grappling with the compliance-related issues regarding GST, possibly due to frequent and drastic changes brought about in the GST. Our learned speaker has deliberated on technical preparedness for such GST audit by MSMEs and covered the key features in great length, which has certainly cleared many doubts. We are extremely thankful to Abhishek Agarwal ji, founder of Abhishek Shankar Agarwal and Associates, for participating in this session as the guest speaker, and also for answering all the queries which has been posted by any attendee or participant. We thank the members of the media fraternity for joining this program and also hope the deliberations will be carried in your esteemed media in a befitting manner. We thank you all for attending and request you all to please carry this with acclamation. Thank you very much. Great. Thank you. Thank you, Abhishek ji, for the just departing one. And it's a really enlightening session, not only for our members, but for us also, and even some CAs who have joined us this deliberation. Amazing. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you. Yes. So we end the session now.